hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 52 of GK, and the name of the chapter is Amazing Facts About Animals. तो हमें पता है कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके पास एक अलग अलग चीज़ें करने के कैलिबर्स होते हैं, राइट. सो हर एक एनिमल के पास अपना एक अलग कैलिबर होता है, अपना एक अमेजिंग चीज़ होती है जो खाली वही परफॉर्म कर सकता है. नन अदर एनिमल कैन डू दैट, राइट. सो इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट. सो शुरू करते हैं. चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड. तो आपको यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है. Here is the help box and you have to choose the correct word from it and learn some amazing facts about animals, जिससे कि हम animals के बारे में कुछ अच्छे और amazing facts जान सके, right? So शुरू करते हैं. The first one which says gorillas are strictly, so obviously gorillas जो होते हैं वो vegetarian होते हैं, so gorillas are strictly vegetarian. So let's write vegetarian over here. After that, zebras are jokingly called dash in the pajamas. तो zebras को हम लोग क्या बोलते हैं jokingly जब वो pajamas में होते हैं, right? So we call zebras as ponies. So we'll write ponies over here, P-O-N-I-E-S, ponies. After that, the only snake that builds a nest is. अब ऐसा कौन सा snake है जो nest बनाता है? Usually nests are made by the birds. Birds nest को बनाती हैं. But here it is a snake जो कि nest बनाता है, right? So the snake which makes the nest is the king cobra. So let's write king cobra over here. So let's write king cobra over here. After that, next, cheetah can run at a speed of dash kilometers per hour. तो cheetah जो है वो एक fastest animal है और उसकी speed लगभग कितनी होती है? It is dash kilometer per hour. So it is 100 kilometers per hour, as 100 is also given in the options. So let's write 100 over here. After that, next one is monkeys can be distinguished from apes by their. So monkeys जो है वो अपनी apes से गायब हो सकते हैं कैसे? By their tails. So we'll write tails over here. So let's write tails over here, T-A-I-L-L-S, tails, right? After that, the next one is a camel with 2 humps is called. तो 2 humps वाला जो camel होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, right? So that camel is basically known as the back train, right? So we'll write back train over here. After that, the largest land mammal weighing more than 6 cars together is ant. तो ऐसा largest land mammal कौन सा है जो कि weight करता है more than 6 cars? उसका weight जो है वो 6 cars से भी ज़्यादा है, right? So it is obviously an elephant. It is the largest mammal on the land. So we'll write elephant over here. Next, hippopotamus can stay in water for dash hours. तो जो hippopotamus है वो पानी के अंदर कितने घंटों तक रह सकता है, right? So he can stay inside the water for approximately 16 hours. So we write 16 over here. So that is it for the chapter. I hope you all have learned more and more amazing facts about some of the animals. So that is it. Thank you so much and have a great day ahead.